हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें हमने बात की थी केमिकल रिएक्शंस, जिसमें केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल विद एक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम रिबन वो की थी। आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। सो देयर आर फाइव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। There are five characteristic features. These are the features due to which we inform that chemical reaction is taking place. Okay, so first is the evolution of gas. Next is the change in temperature. Next is the formation of precipitate. Change in state and change in color. Okay students, out of these five, 1, 2, 3, these are most important and questions come in the board exam related to these three characteristic features. So today first we will discuss about the only evolution of gas and change in temperature. So let's start the first evolution of gas. Okay, evolution of gas. Evolution word बना निकलने से, release. You can use the release word instead of the evolution. Some chemical reactions are characterized by the evolution of gas. That means कुछ reactions ऐसी होती हैं जिसमें कोई ना कोई गैस निकलती है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो CO2 हो, या कोई भी गैस हो, XYZ. Some chemical reactions are characterized by the evolution of gas. That means अगर किसी reaction में गैस निकले, it means chemical reaction is taking place. For example, if we add the zinc granules in the dilute hydrochloric acid, then hydrogen gas is liberated. When we add the zinc granules in the hydrochloric acid dilute, then hydrogen gas is liberated out or evolved or released. So this is the example of the evolution of gas. Understood or not? Have you not understood? You can ask your doubts in the comment section. Next is the change in temperature. It means some chemical reactions are characterized by the change in temperature. But before this, you should know what is temperature. Do you know what is temperature? In lower classes you have studied. Okay, well, temperature is the मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी या तो हॉटनेस है या कोल्डनेस है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर. मींस किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस की जो डिग्री, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर. सो कुछ केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर चेंज होता है, दैट मीन्स आइदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. इन केमिकल रिएक्शंस temperature is changed whether it is increased or decreased. On the basis of this, chemical reactions are of two types: exothermic and endothermic. Thermic means heat and exo. साइंस में जहां भी exo वर्ड आता है, exo वर्ड आता है बाहर के लिए और endo वर्ड आता है अंदर के लिए. Exothermic reactions. Exothermic reactions are those reactions in which heat is released. These are called exothermic reaction. That means temperature increased.
The reactions in which temperature is increased, these are called exothermic reaction. Endo means under, thermic means heat. Endothermic reactions are those reactions in which heat is absorbed. Heat is absorbed. Heat absorb होगी, जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो कोल्डनेस वी वुड फील द कोल्ड, और जब हीट बाहर निकलेगी वी वुड फील द हॉटनेस. फॉर एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. We are taking the another example. If we take the calcium oxide, जिसे कलई चूना बोलते हैं, पुताई वगैरह करते हैं, उसमें यूज होता है कैल्शियम ऑक्साइड. प्लस इफ वी एड द वाटर इन द कैल्शियम ऑक्साइड, देन टेम्परेचर इज इंक्रीज. COH होल का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट. इवोल्यूशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम डिनोट करते हैं बाय द अपवर्ड एरो. एक्सोथर्मिक को हम शो करते हैं प्लस हीट से, रिएक्शन में प्लस हीट लिख के. एंडोथर्मिक रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस हीट लिख के. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इन दिस हीट इज released, that means we would feel the hot. This is the calcium hydroxide, that is the calcium oxide. If we add the water in the calcium oxide, then the calcium hydroxide is formed with the increase in temperature. In this reaction temperature is increased. So these are the two chemical features. Next is the formation of precipitate. We would discuss this in the next video, so keep watching in the next video. Thank you.